Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are preparing for IBPS clerk exam, and today you will attempt mock test number 16. And when we say mock test number 16, means this is mock test number 1 of 2023. So we have already finished mock test of 2022. Overall, we will be covering 15 mock tests of 2022 and 15 mock tests of 2023 till our preparation, and the exam starts from 26th of next month. So on few days are left for the exam, and the candidates, those are appearing for RRB exam, they will follow the timetable of RRB. They will follow this timetable after finishing their pre-exam of RRB. Right now they should focus only on one exam. Link of this mock test is available in description and comment column. Click the link, register, take annual plan along with topic test, along with sectional mock test, and apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy these plans through Smart Kida app also. Download the app, select these plans, and apply coupon code AA03 to have 10% off. Now, after attempting the full length mock test, you will have some areas where weakness persists. That means where your question answers are wrong. So focus on those topics. Divide your time into 4 parts: 2 hours for English, 2 hours for quant, 2 hours for reasoning, and 2 hours for banking and current affairs. In 2 hours of English, you will be attempting topic test of English and sectional mock test of English. In 2 hours of quant, the topic test of quant and topic test of sectional mock test of quant. In 2 hours of reasoning, topic test of reasoning and sectional mock test of reasoning. So the combination of full length mock test, topic test and sectional mock test will be a winner combination. Only mock test is not sufficient. Along with topic full length mock test, you must attempt topic test, you must attempt sectional mock test. Then comes the current affair. For current affair, I have suggested you a very good source. Link is there. Click the link. You will land up on the app. Download the app and take 2023 plan. Apply coupon code AA03. You will have 10% off. Now you have access to daily, weekly, monthly videos. Cover as much as current affair you can, at least from 1st April 2023. So daily something on current affair, addition of some knowledge of current affair goes long way, because after the pre-examination you don't have sufficient time to cover the current affair. So daily spending 1 hour or 2 hours on current affair is worth it, because that adds to your knowledge, and this trickle down knowledge of current affair is very, very handy when you go for your main examination. Then also acquire knowledge in banking. For acquisition of knowledge in banking, I have provided you 3 playlists. One is banking finance economics, second is current affair on banking finance economics, and third is banking quiz. Watch 10 to 15 videos per day. This 10 to 15 videos per day will help you to acquire good knowledge in banking. Make the notes of these points, and these points will be useful when you are appearing for main examination. You will simply go through these points along with the topics, along with the videos just before your main examination. That will help you. Every year few questions comes from banking, and usually candidates are weak in banking, and that's why they lose the opportunity. They go very near to the selection and they miss out sometime only on account of banking questions. So a candidate who has rich banking knowledge has an edge over other candidates. So acquire that knowledge. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. IBPS क्लर्क एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं. 26 अगस्त से ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा. तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 16 अटैम्प्ट करेंगे. देखो, अभी तक हमने 15 मॉक टेस्ट 2022 के फिनिश कर लिए हैं. अब हमने करना क्या है? 15 मॉक टेस्ट तो हमने करने हैं 2022 के, और 15 करने हैं 2023 के. इस तरह 30 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज दे देंगे, काफ़ी अच्छी हमारी तैयारी करा देंगे एग्ज़ाम के लिए. मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एनुअल प्लान ले लेंगे, साथ में टॉपिक टेस्ट ले लेंगे, साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लेंगे, और कूपन कोड लगाएंगे AA03. 10% ऑफ आ जाएगा. स्मार्ट किडा ऐप से भी आप ले सकते हैं. ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, तीनों प्लान्स को सेलेक्ट कर लेंगे,
और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अब आपके पास मॉक टेस्ट आ गया, मॉक टेस्ट आपने अटैम्प्ट किया, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद देखा कि अभी भी कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो आपका वीक एरिया है, इस एरिया पे आपको फोकस करना है। अब आप अपने टाइम को 4 हिस्सों में बांट लीजिए। 2 घंटे दीजिए इंग्लिश को, 2 घंटे क्वांट को, 2 घंटे रीजनिंग को और 2 घंटे बैंकिंग और करंट अफेयर को। जो 2 घंटे आपके इंग्लिश के हैं इसमें आपने टॉपिक टेस्ट करने हैं और सेक्शनल मॉक टेस्ट करने हैं इंग्लिश के। जो 2 घंटे आपके क्वांट के हैं उसके अंदर आपको टॉपिक टेस्ट करने हैं क्वांट के और सेक्शनल मॉक टेस्ट करने हैं क्वांट के। और जो 2 घंटे रीजनिंग के हैं उसमें टॉपिक टेस्ट करने हैं रीजनिंग के और सेक्शनल मॉक टेस्ट करने हैं रीजनिंग के। ये जो आपका कॉम्बिनेशन है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये आपकी कम्प्रीहेंसिव तैयारी कराएगा। कुछ लोग खाली मॉक टेस्ट करते रह जाते हैं, वो पूरी तैयारी नहीं है। पूरी तैयारी के लिए आपको टॉपिक टेस्ट भी करने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी करने हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करने हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपका विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा और आपकी नॉलेज लगातार बढ़ती चली जाएगी। टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर करने हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ। फिर है करंट अफेयर। करंट अफेयर निरंतर आप करते रहेंगे तो आपको एज मिलेगा अपने कंपटीटर्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग प्री के एग्ज़ाम के बाद करंट अफेयर की तैयारी करते हैं। जो लोग निरंतर करंट अफेयर की नॉलेज एक्वायर करते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। करंट अफेयर का अच्छा सोर्स मैंने आपको दे दिया, उसका लिंक दे दिया। उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लें, 2023 का प्लान ले लें, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अब आपके पास डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ्स आ गए। यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे। कम से कम 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स आपको करंट अफेयर तैयार करनी चाहिए। अब करंट अफेयर की नॉलेज एक्वायर करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो महीने तो पूरे हो गए उनके तो मंथली पीडीएफ से कर लीजिए, और जो मंथ अभी चल रहा है जैसे जुलाई चल रहा है तो उसको डेली और वीकली पीडीएफ से कर लीजिए। बैंकिंग की नॉलेज आपको और कैंडिडेट से आगे ले जाती है। काफ़ी कैंडिडेट्स की वीक होती है नॉलेज बैंकिंग की, और जिनकी स्ट्रांग होती है वो ये एडिशनल नंबर ले जाते हैं। इसके लिए 3 प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है, तीनों की तीनों प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स और बैंकिंग क्विज। यहाँ से 10 से 15 वीडियो रोज की देखिए, और इन वीडियोस को देखने के बाद जो इसमें बातें बताई हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उनको अपनी डायरी पे नोट करते चलेंगे। अब ये जो आपके नोट्स बन जाएंगे ये आपके मेन एग्जाम से पहले काम आएंगे। 10-15 वीडियो रोज की देखेंगे, आपका आधा पौना घंटा लगेगा रोज का, मगर आपकी बैंकिंग की नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और ये आपको वो एडिशनल नंबर दिलाएगी जिसकी वजह से कई लोग जॉब से रह जाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।